हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डेटा प्रॉग हब, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट विल बी द रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा साइंटिस्ट एट फैंग कंपनीज। एंड आई अश्योर यू कि अगर तुमने ये पूरी वीडियो देख ली, यू डोंट रिक्वायर एनी अदर वीडियो ऑन रोड मैप। तो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है दैट व्हाट आर द स्किल्स दैट यू रिक्वायर टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा साइंटिस्ट। तुम उन स्किल्स को कैसे एक्यूमुलेट करोगे, तुम उन स्किल्स के ऊपर कैसे काम करोगे, क्वेश्चंस कौन से वेबसाइट पे सॉल्व करोगे, तुम प्रोजेक्ट कहाँ से बनाओगे, तुम डेटा सोर्स कहाँ से अरेंज करोगे, देन आफ्टर how we are going to target the companies and how we are going to apply in those companies. But before we begin, just look at it, जरा इसको देखो यार। तो this तुम देख रहे हो, ये this is the salary that the FAANG companies are paying for a data science role. But before initiating, there is one thing जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. So just look at it. Lenskart is hiring for a data analyst role, and here the requirement is from allied health background. Of course, there is a requirement from computer science as well, but the person can be computer science or allied health. So generally there is a debate कि क्या एक नॉन टेक का स्टूडेंट डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बन सकता है. So of course yes, the person can become a data analyst or a data scientist. So now let's discuss in detail that how you can create your portfolio, how you can create your profile and apply to these companies and get selected. So the question is that how can I reach FANG? So basically हमारा एजेंडा है कि हम टेक्निकल स्किल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द टेक्निकल स्किल्स दैट वी रिक्वायर. तो यहाँ पे हम टेक्निकल स्किल्स को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे: फाउंडेशनल स्किल्स, कोर टेक्निकल स्किल्स एंड बिजनेस एक्यूमेन. तो फाउंडेशनल स्किल्स में अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, टेक माई रिकमेंडेशन कि तुम एक्सेल या गूगल शीट से इनिशिएट करो. इट विल टेक यू 2 months टू complete the excel. In 2 months you will have a solid foundation of excel. 2 months यहाँ पर तुम एक्सेल पे इन्वेस्ट करो. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सेल यू मूव टू एसक्यूएल. जब तुम्हारे को एसक्यूएल में भी क्लोज टू 2 months लग जाएगा. एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट 500 क्वेश्चंस, वो मैं बताऊंगा अभी आगे. बट द फर्स्ट स्टेप इज you initiate with excel, then you move to sql, and then you move to python, or after sql you can go to data visualization, and after data visualization you can come to python. So I want you to take notes, write these skills that you require. So now let's begin with excel. चलो देखते हैं कि हमें एक्सेल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम एक्सेल में क्या क्या सीखने वाले हैं. तो you can pick anyone, you can pick either excel or google sheet, because google sheet and excel it will take you 7 to 8 weeks. They require the investment of 7 to 8 weeks. So you can pick anyone, either excel or google sheet. तो अगर तुम एक्सेल सीखते हो तुम गूगल शीट पे आराम से काम कर सकते हो. अगर तुमने गूगल शीट सीखा तो तुम एक्सेल पे आराम से काम कर सकते हो. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू रिक्वायर टू लर्न इन एक्सेल. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर. देखो, जब मैं सीख रहा था एक्सेल, इट टुक मी क्लोज टू 7 to 8 वीक्स, जहाँ पे मैंने बेसिक एक्सेल के फंक्शन सारे सीख लिए थे, बेसिक टू एडवांस. एंड आई वॉज एबल टू डू डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल. बट क्या एक्सेल इज इनफ? नो, एक्सेल इज नॉट इनफ, बिकॉज एक्सेल के पास लिमिटेशन है. एक्सेल हैज अ लिमिटेशन ऑफ 1 लाख रोज. तो अगर हमारे पास डेटा है ऑफ 10 मिलियन रोज, ऑफ 1 बिलियन रोज, फॉर एग्जाम्पल amazon के पास कितना सारा डेटा अवेलेबल है, लाइक देयर आर lakhs of orders being processed every day, right? So अगर वैसे डेटा सेट्स को हमारे को एनालाइज करना है, ऊबर के डेटा सेट को एनालाइज करना है और स्टॉक मार्केट के डेटा सेट को एनालाइज करना है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो एक्सेल विल और गूगल शीट विल नॉट हेल्प अस टू एनालाइज दोज बिग डेटा सेट्स. बट Excel or Google Sheet will give you a warm up, the first thing. Number second, you will be able to analyze or do data analysis on data sets less than 1 lakh rows. Okay, so तुम Excel के इन टॉपिक्स इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, एंड यू कैन टेक अ नोट दैट तुम्हारे को पता पता चल जाएगा कि हाँ बस दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर, राइट? सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सेल, गो टू kaggle.com. kaggle.com क्या है? kaggle.com इज अ वेबसाइट जिसके हम आगे आने आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू यूज इट ऑन फॉर डिफरेंट पर्पसेस. बट अभी फॉर अ बिगनर
पॉइंट ऑफ व्यू, तुम इतना समझो कि तुम्हारे को kaggle.com पे जाना है, go to these data set option and here you can search for the data sets in which you are interested. For example, search Google, search Netflix, search Uber, search Ola, search Blinkit, Zomato, any data set you can search. Here the data sets are available. There are high chances that the data sets will be cleaned. Download those data sets in the form of Excel, and you can build a basic project using all the skills that you have learned here. So these skills will be used to make these projects. And take my recommendation, I recommend you कि जब तुम ये सारे स्किल्स को सीखो, तुम एटलीस्ट 2 से 3 4 प्रोजेक्ट तो बनाओ, ठीक है? तुम्हारे को प्रोजेक्ट बनाने से क्या होगा, you will get good confidence, you will get sound knowledge of all the skills that, क्योंकि देखो तुम जब पहली बार प्रोजेक्ट बना रहे होगे, जस्ट इमेजिन दैट तुमने अभी एक कैगल से कोई भी डेटा सेट को डाउनलोड किया है एंड यू आर एनालाइजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तो तुम एक छोटे से 10 12 15 रो पे प्रैक्टिस कर रहे थे, नाउ यू सडनली गॉट अ रो लाइक 15,000 रोज, 50,000 रोज और 1.5 लाख रोज। सो ऐसे कंडीशन में व्हेन यू विल बी वर्किंग ऑन दीज डेटा सेट्स, तो तुम्हारे को प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। मेक एटलीस्ट 3 to 4 प्रोजेक्ट्स, 3 से 4 और प्रोजेक्ट लाइक 3 4 घंटे लगाओगे, एक प्रोजेक्ट अच्छे से बन जाएगा। इतने में तुम्हारा काम हो गया, तुमने 3 4 प्रोजेक्ट बनाया, जो तुम्हारा बेस्ट ऑफ 2 है उसको अपलोड करो लिंक्डइन पे। सो एवरी प्रोजेक्ट दैट यू आर मेकिंग, अपलोड इट ऑन लिंक्डइन, ओके? सो तुमने 4 प्रोजेक्ट बनाओ, बेस्ट ऑफ 2 को लिंक्डइन पे अपलोड करो, एक्सेल का काम हो गया। So after Excel, let's begin with the core technical skills. So in the core technical skills, we have 3 skills that we have to master. Number one, SQL. Number second, Python or R. Number third, data visualization. So number one, let's begin with SQL, Structured Query Language. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हमने ऑलरेडी एक्सेल सीख लिया, हमने एक्सेल पे डेटा एनालाइज किया, हमने एक्सेल पे डेटा विजुअलाइज भी किया, एंड देन आफ्टर वी made a project, we uploaded a project on LinkedIn, then why we require SQL for data analysis? Okay, तो अब जरा सोचो, when if we take the example of Amazon, Amazon would be processing like like over 1 lakh orders per day worldwide. तो जरा सोचो कि what would be the extent of the orders, what would be the extent of the data that Amazon would be generating just by processing those orders. The order processing is not only the data source, okay? It can be, अगर मान के चलो कि मैं अमेजोन पे गया और मैंने अमेजोन पे एक शर्ट सर्च किया और आई जस्ट सर्च फॉर नाइके शूज, तो अब जब भी मैं गूगल का कोई और या फिर कोई भी ऐप यूज कर रहा हूँ जहाँ पर एड्स आते हैं उस एप्स में, तो दोज एप्स शो मी द लिंक्स ऑफ द शूज दैट आर अवेलेबल ऑन अमेजोन। ऐसा होता है, ओके, सबके साथ होता है। तो ऐसा क्यों, कैसे लगा पता अमेजोन को या गूगल को या फिर उस मार्केटिंग एजेंसी को जो अमेजोन के लिए ऐड चला रही है, दैट आई सर्च फॉर शूज, व्हाई दैट एजेंसी इज नॉट शोइंग मी द एड्स ऑफ टी शर्ट्स, और व्हाई दैट एजेंसी इज नॉट शोइंग मी द एड्स ऑफ बेल्ट्स और हेलमेट? ऐसा क्यों है दैट एजेंसी इज सेलेक्टिवली शोइंग मी द एड ऑफ दैट शूज? क्योंकि उसके पास वो डेटा जनरेट हुआ दैट आई एम सर्चिंग a shoe on Amazon, or I am searching a belt or a wallet on Amazon or Myntra or any shopping website or any website, okay? So whenever we search or whenever we do anything on Google or any website, we generate a data. Suppose that we go on Blinkit, we add 4 प्रोडक्ट्स, हमने 4 प्रोडक्ट को ऐड किया, ठीक है? हमने मिल्क ऐड किया, हमने बटर ऐड किया, हमने ब्रेड ऐड किया, हमने एग्स ऐड किया, ठीक है? हमने कार्ट में ऐड किया, बट सपोज दैट कि हमें लगा कि डिलीवरी चार्ज ज़्यादा है, ओके, और हमने ब्लिंकिट से वो प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया, एंड देन वी जस्ट वेंट टू द नियर बाय शॉप एंड जस्ट बॉट इट बाय आवर सेल्फ। बट ब्लिंकिट के पास वो डेटा जनरेट हुआ दैट अ कस्टमर आईडी आया हमारे पास, उसने इन प्रोडक्ट्स को सर्च किया, देन आफ्टर एडेड टू द कार्ट बट नॉट नेवर ऑर्डर्ड। So these are the data that are being generated on these websites, and these data are really large, the big data like 1 lakh rows or 1 million rows. तो वैसे डेटा को एनालाइज जब करना होता है हमारे को, तो वी आर यूजिंग एसक्यूएल। अब एसक्यूएल में वी आर गोइंग टू लर्न वेरियस कंसेप्ट। तुम्हारे को एटलीस्ट देखो, मुझे एसक्यूएल को सीखने में मैं लाइक टू बी ऑनेस्ट लाइक इट टुक मी क्लोज टू 2.5 months बिकॉज आई वॉज गोइंग वेरी स्लो विद एसक्यूएल। बट अगर तुम
उसको दिन के 5 से 6 घंटे डेडिकेट कर सकते हो. इट विल टेक यू 8 वीक्स. ओके, तुम इतने में एसक्यूएल को कर लोगे. और विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग इट, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो लेट्स बिगिन विद एसक्यूएल कि हमें एसक्यूएल में सीखना क्या क्या है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न इज द सेटअप ऑफ एसक्यूएल. टेक माई रिकमेंडेशन कि तुम बिग क्वेरी सीखो सबसे पहले, क्योंकि देर आर अदर वर्जन ऑफ एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे, बट यू रिक्वायर टू डाउनलोड इट. But BigQuery, it is a product of Google. You can use it in the cloud format. So तुम कोई भी डेटा को डाउनलोड करो इन द फॉर्मेट ऑफ CSV और Excel, upload it on BigQuery in the CSV format, and you can directly analyze it in BigQuery. So learn BigQuery. There are no major syntax differences between BigQuery or PostgreSQL or MySQL, क्योंकि जब तुम सीखोगे BigQuery में, and when you will be practicing these questions on HackerRank or LeetCode, there you will get options to choose the language, like you are choosing MySQL or you are choosing PostgreSQL. तो तब तुम देखना उस सिचुएशन में कि बिग क्वेरी एंड माई एसक्यूएल के सिंटेक्स में देर आर नो एनी लाइक वास्ट डिफरेंसेस. तो तुम कोई भी सीखो, बट माई रिकमेंडेशन बिग क्वेरी. नंबर सेकंड, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग सीखोगे तुम. So initiate with filtering and sorting. These are the basic concepts. It will easily take 4 to 5 days. अब यहाँ पे तुम सीखने वाले हो वेयर लॉजिकल ऑपरेटर्स. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि अगर हम ऊबर का डेटा एनालाइज कर रहे हैं एंड लाइक हमारे को एनालाइज करना है कि हमें नंबर ऑफ बुकिंग्स चाहिए जहाँ वेयर द एड्रेस वॉज चांदनी चौक, और वेयर द एड्रेस वॉज कनॉट प्लेस, और वेयर द एड्रेस वॉज गुरुग्राम. सो इन सच लाइक जहाँ पे हमें फिल्टर कर, लाइक यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन शॉर्ट कि तुम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हो, कि अगर अभी मैं सारी चीज़ों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने लगूंगा तो द वीडियो विल बिकम टू वास्ट. और एक वीडियो में, एक 15-20 मिनट के वीडियो में, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल टू explain each and every concepts of SQL. How it can be possible, right? So you can take a note or you can take a screenshot from here that number one you will take SQL, the number one SQL basic setup. It will take 2 to 3 days. यहाँ पे in the basic setup you will learn the introduction to databases, or then after you will learn about SQL installation, connecting it to database. My recommendation, initiate with BigQuery, and then after you, if you want, you can just download MySQL or Postgre, but initiate with BigQuery. That will help you. Number second, filtering and sorting. Any trainer that you will choose or any book that you will choose, every book is going to cover these topics. So now the aggregate functions, it will take 5 to 6 days. Joins, here you will learn to join two different tables. Suppose that we have a table of custom of products and another table we are having of customer. Okay, how we will be able to join these two tables to form a resultant table, and we can analyze it together. So here, these are the things that you are going to learn in joins. This is really an interesting concept and very important for FAANG style questions and FAANG interviews. Then subqueries and nested queries. That when what are subqueries? When you can write a query within a query. Nested queries, they are same. Okay. So then sets and operations you will learn. So union all. Then string data types. Okay. Advanced filtering, conditional logics. So take the notes of these, take screenshots, pause the videos. It will help you to take a guide or take a roadmap that what you are going to do in SQL, how you are going to finish the course of SQL. So at the end, you will learn CTE, views, CTE. So when we don't want to write subqueries, so in that particular scenario, we particularly use CTE. So by this topic, we have completed all the topics that are required to finish SQL. So I hope that you have taken the screenshots of all the topics that are important in SQL. Just take the screenshot of the syllabus of SQL that you require to finish. You don't require to learn everything in SQL, but you require to learn limited things, but practice it as many as you can. So after learning these topics, go to HackerRank, go to LeetCode for practicing the questions. Okay,
take my recommendation, go to hacker rank first. Lead code is more advanced questions are available on lead code. Start practicing the questions on lead code after you have practiced at least 150 to 250 questions on hacker rank, because after practicing 150 to 250 questions on hacker rank, it will give you a sound knowledge and a confidence on all the topics that you have learned here. So pick up any instructor, pick up any book, learn all the topics of learn these topics of SQL, then start practicing on hacker rank, start practicing on lead code. Go to hacker rank. Here you can see in the hacker rank, just search www.hackerrank.com. Okay, scroll down. Here you will see the option of SQL. Start practicing. Look, here there is an option of practicing Python as well, artificial intelligence, mathematics, Java. There are various options. Go and pick SQL. Start practicing from day one. Learn the topics, practice it. Learn the topics, practice it. This is the same repetitive task that you have to do every day. In SQL you have to solve at least 500 questions. When you can say that yes, you have learned, at least you have become a decent SQL coder. Okay, so after finishing SQL, the next thing that we are going to pick is data visualization. So what is data visualization? Okay, so in Excel we have like we talked about that we are going to analyze data. In SQL we talked about that we are going to analyze data. In Excel we were analyzing data that were like less than 1 lakh rows. In SQL we were analyzing big data. But when it comes to data visualization, what we are going to do, we are going to present it in the form of charts and graphs that will be easily understood by the people who don't like. Suppose that यार तुम्हारे सामने कोई 1 लाख रोज रख दे और बोले उससे एक मीनिंगफुल सिचुएशन, उससे एक मीनिंग जनरेट करो, हाउ यू विल बी एबल टू डू इट? अगर मैं तुम्हारे सामने ये इमेजेस नहीं रखूँ, ये विजुअलाइजेशन क्रिएट नहीं करूँ, जस्ट आई जस्ट plain raw data, how like you will not understand it, right? So in that particular scenario, what you will be doing, अगर मान के चलो कि हमारे पास 1 लाख रोज है, ठीक है, ऑफ ऊबर, फॉर एग्जांपल वी आर एनालाइजिंग ऊबर डेटा, तो हम ऊबर से एनालाइज करेंगे कि दिल्ली, अगर चलो हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं और ऊबर का एग्जांपल लेते हैं, वी आर एनालाइजिंग ऊबर। ओके, सो हम ये देखेंगे कि ऊबर की मैक्सिमम बुकिंग बुकिंग किस टाइम पे हो रही है। इज इट 6 a.m. in the morning, 6 to 8 a.m. in the morning, or 6 to 8 p.m. in the morning, or like 1 to 2 p.m. in the afternoon? So what is the time in which the maximum booking in Uber is happening in Delhi? नंबर सेकंड, व्हाट वी कैन सी दैट कि कौन सा लोकेशन है जहाँ पर मैक्सिमम कैंसलेशंस हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे वहाँ पे, क्या स्टेक होल्डर के सामने पूरा का पूरा डेटा शीट प्रेजेंट कर देंगे? नहीं, उनको क्या समझ में आएगा डेटा शीट से, राइट? तो व्हाट वी डू, वी जस्ट मेक अ ग्राफ दैट दीज आर द टॉप 10 एरियाज जहाँ पे मैक्सिमम कैंसलेशंस होते हैं, दीज आर द टॉप 10 एरियाज विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मैक्सिमम रेवेन्यू, दीज आर द टॉप 10 एरियाज जहाँ पर ड्राइवर कैंसलेशंस मैक्सिमम है। ओके, तो अब इन हमने पहले डेटा को एनालाइज किया, देन आफ्टर डेटा को विजुअलाइजेशन किया, एंड देन वी प्रेजेंटेड दैट विजुअलाइज्ड डेटा इन फ्रंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। और उस विजुअलाइज्ड डेटा के ऊपर, उस विजुअलाइज्ड डेटा के आधार पर देयर विल बी बिजनेस डिसीजंस दैट विल बी टेकन। So that is your duty. You have to take the raw data, you have to analyze it, you have to visualize it, and you have to present it in the forms of charts and graphs in front of the stakeholders, and the stakeholders will be reading those analyzed data in the form of charts and graphs, and they will be taking business decisions on those data. For example, this is an example of Uber dashboard. Okay, so just look at it, total bookings. So like total bookings, it can be हर booking ID के लिए एक row, but now here we have the aggregated value, right? What is the revenue per kilometer? What is the average revenue? Which is the vehicle type that is the winner, like which generated the maximum profit? Which is the vehicle type that generated the least profit? Okay, just look at it. Cancellations hotspots. These are the 10 areas that are where the cancellations happened max. Just look at it. Customer versus driver cancellation over time. That according to like time
what is the time at which the driver and customer they cancelled max. So like, but here you can see it clearly, like top 10 locations by revenue contribution, revenue per vehicle, total rides by vehicle type, which is the vehicle type in which the maximum ride happened, which is the vehicle type in which the least ride happened. So जो तुम्हारे पास data होगा, the big data, the data of like 10 million rows, you will be ultimately converting that data into this format. So that is the reason, so this is the work of a data analyst, and this is what you are going to learn. So after learning SQL, pick any trainer, learn data visualization. In data visualization, introduction to data visualization, I gave you the introduction to data visualization, right? Then what are the basic charts, data structuring options, filters and calculations, table calculations, operations? These are topics. Go and find about these topics, learn about data visualization. Now there is again a debate that what we are going to learn. Either we have to pick Tableau or we have to pick Power BI. Take my recommendation, pick Tableau. Tableau is like vastly used by most of the companies. Tableau you can use it on Mac or you can use it on Windows. Tableau, that is links can easily be shared. Like if I don't have the app with me of Tableau, but I have a link available of a data, of a visualized data of a dashboard, I can easily utilize that link to see that dashboard. So my recommendation, initiate with Tableau, and it's same as Excel and Google Sheet. You know one, you know another, right? So after when you learn the data visualization, go again on kaggle.com, download again a good sheet or a good data set on which in which you are interested. Create a project on it, publish the dashboard on Tableau public, and share it on LinkedIn. So this is your, again, when you are learning Tableau, take my recommendation, do at least 3 to 4 projects that will help you to understand Tableau much better. Because it will like अगर तुम किसी मान के चलो like you want to build like a good must like good physique, and you are just watching a video of a person who is training in the gym. मैं 8 घंटे बैठ करके किसी जिम की वीडियो देखूं, like it will not benefit me, right? I have to ultimately I have to go and to the gym and work on it, right? अगर मैं किसी को बैठ करके तैरते हुए देख रहा हूँ, I am just watching someone swimming, I will never learn swimming, right? For to learn swimming I have to enter in the pool, I have to learn swimming. So go, just learn Tableau, practice it on project, like your first project. I know that it will not be the best project, but it will be the first project, right? You will learn things. Do again, like do 3 to 4 projects, and then if you find like any best of the like 4 project, upload it on LinkedIn, share it on LinkedIn. The project ideas on which you can work on the Netflix data. Again, user engagement and retention analysis, you can work. This is a really an interesting topic, you will like it. With data visualization, we are going to end this video, and I will be uploading another video for Python roadmap, and I will include all the certifications, all the free certifications, free but reliable certifications that you can take, and you can upload it on LinkedIn, and how you are going to achieve all those certifications. So I will be making another video on that, and this is my first video on YouTube. So I aim for like I can't aim for the whole world with this video, right? But I aim for like 100 likes and 100 subscribers. So please do subscribe my channel, do like give a like to this video, and help me to grow this channel. And I will be uploading all the videos related to data science and data analytics, and I will be helping you with all the current world scenarios that you require to become a data analyst. Thank you.